Good evening, my dear student. Now we are going to discuss class 6 science subject curiosity, chapter 11. Okay, that is nature's treasures. This is part 1 video on this chapter. So, dear students, please remain with me with a great patience and enthusiasm. You'll get the basic understanding and solution on the question of this chapter. So let us move to the main topics without any delay. See chapter 11. You see, the name of the chapter is Nature's Treasures. Means, nature means the surroundings around us, Prakriti. Treasure means, that is, what is treasures? Sampad, that is, resources that in monetary terms, आपने सुना होगा फाइनेंस में ट्रेजरी जहाँ पे पैसा रहता है, पैसा, money. It provides lots of helps our wealth, health, everything. So nature is our health, wealth, everything, our survival source of. Okay, let us move forward. The chapter starts with a story. Okay, Aji. Here, the Bhumi and Surya, the two students, going to a vacation. They're going to their grandmother house named Aji. So it is in a village. They are going to the village for enjoying the vacations. They saw a forest in the Western Ghats. The Aji, their grandmother, lives around the village, which is nearby Western Ghats. You know what is Western Ghats? I'm showing you. All of you might have seen in Indian map. Okay, it is like this. In the downside area of Indian map, like this, right? There is Gujarat, and I'm not doing the upper portion. Okay, this portion. So in India map, in this side, Indian Ocean. Okay, ocean. And here on this side, there is Bay of Bengal. Bay of Bengal. Okay. So now not Bay of Bengal, it is Arabian Sea. Arabian Sea. Not Bay of Bengal. This is called Bay of Bengal. Okay, this is Indian Sea, and in this side it's called Bay of Bengal. So you see, if you look in the map, the direction, this is north, this is east, this is south, this is west. So this side is east area. So in this side there is a hilly region, hills. In this also there is hills. So this hills range of hills is called Eastern Ghat. And this hill range is called Western Ghat. So here their grandmothers lives around Western Ghats. So waters comes from the sea and they strike here, and they cannot cross these hills and come to this area. Cannot come. This goes via this area and come in the Himalaya and then again come back. Because in this area it is very beautiful nature. In this side also very beautiful nature. So they will enjoy this nature. Okay. This is, I have given you some idea about the Western Ghat, okay? Because it is nearby ocean.
Arabian Sea, nearby Arabian Sea. So the air in the village is fresh and cooler than the city. देखो, fresh and cooler. Why? Because in the village there are lots of trees and the population is very less. And in the village, a few cars moves. So there is no pollution. Okay, and hence it remains cold and very fresh air. But in the town side, lots of car moves, air pollution happens, it is highly populated, we exhale carbon dioxide, which makes the air warm. That's why in city area always remain hot, right? So you notice that I am explaining you lots of things. It will be helpful for you. Now they can see beautiful hills. ये बोला ये hills है. Stream means very small river. Many interesting plants, animals, and birds around them. So you see, in nature, nature provides us all these things. So these are nature's are treasures. One afternoon, Bhumi and Surya asked Aji, to their grandmother, to tell them more about the place. Aji says, children, do you know that the place has several treasures of nature that enrich our lives? The pure air is refreshing and the soil is so fertile that that it supports a variety of living beings. How the nature is a treasure? Nature provides us pure air and refreshing, and the soil which is fertile that supports a variety of living beings. Moreover, these places gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. So different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. So all these are treasures. Okay. I hope you have got the meaning of the name of this chapter in this page. Okay. So let us move forward. Before this, I am rubbing out all these annotations. So my dear student, I'm again urging you to remain with me. So let us move forward. This is the nature. Their grandmother is sitting over here, and nearby their home, their house, there are a lot of trees, plants, and yeah, green environment, all kinds of insects, all kinds of animals. This is a site of a village. Okay. Now, which is most important is that we all are part of our nature. This is most important thing. We all are part of our nature. Nature के बिना we cannot survive. Okay. We all are part of nature. Okay. Now I will take you through in next page. They are going to make an experience. In bola ki take a deep breath in and then breathe out slowly. Take a deeper breath in again. How? Hold your breath for as long as you can and then breathe out slowly. How long can you hold for your breath? How do you feel when you hold your breath? Yeah, all this, experience or the fact they practiced here is the most important thing. From this activity, we can get so many things. You see,
we find that it is difficult to hold our breath for a long time. The air which, why? Answer is there. The air which we breathe in has oxygen. Very, very important. So you note it down. From here, the air which we breathe in has oxygen. Question will come like this. The air which we breathe in has dash. Our body needs oxygen. Why? To perform its function. When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. And that's why we feel some fatigue or odd. Okay, so that's why we cannot hold uh, our breath for a long time. Okay, why? Because our body does not get through enough oxygen for performing the function. Thus, we need oxygen for our survival. Similarly, most of the living beings also need oxygen for the survival. Okay, do not hold your breath for so long that you start feeling uncomfortable. Very, very important. Why do you feel uncomfortable? Because if we, most important, if you hold our breath for long time, then our body do not get enough oxygen for its functioning. Okay, you note it down. Now I am going to the next topics. ये सब एग्जाम में आना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम में अवश्य जरूर आएगा. ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में. In this page, there is 2 highlighted portion. Okay, you never miss those highlighted portion for every chapter, because most important thing is given over here. We can survive without food or water for a few days. But we cannot survive without oxygen for even a few minutes. Most important. The air which is surround us, the earth is a mixture of gases. Can you name some gases which are present in the air? Our surrounding में क्या होता है? Air होता है. Air में होता है mixture of different gases. Okay. बोलेगा name those gases which presents in the air. So it contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and other gases in small quantities. सबसे ज्यादा रहता है nitrogen, most abundant gases. Okay. So notice that in 100 square area 78% रहता है 78% रहता है नाइट्रोजन गैस. क्या? नाइट्रोजन गैस. इसको सिंबल में लिखता है N2. ठीक है, और ऑक्सीजन रहता है 21%. ऑक्सीजन इसको बोलते हैं O2. ठीक है, ऑक्सीजन रहता है 21%. और बाकी देखो दोनों मिलकर कितना होता है? दोनों मिलकर हो गया 99. तो बाकी जो 1% है वो रहते हैं अदर गैसेस. ठीक है, सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलो हम प्रोसीड करते हैं दूसरे
पेज में each and every page are very important in the exam point of view and also for knowledge. Okay, don't miss any page. That's why I'm not missing, I'm elaborating on it. You see here it is mentioned nitrogen 70%, oxygen 21%, argon carbon सब मिलके 1% है. Here is a graph also. ठीक है, ग्रीन पोर्शन सबसे ज्यादा है, रेड इसके बाद, देन दैट इज क्या बोलते हैं इसको, ये नॉट येलो लाइक इज गुलाबी बट, तो ठीक है, कलर तो दिख ही रहा है. यू नोटिस दैट, मतलब पर्पल बोल सकते हो. यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रसल. जो हमारा सराउंडिंग में जो एयर है ना, उसको पता कैसे चलता है, जब ये ब्लो होता है, जब ये फ्लो होता है, हमारा बॉडी, हम सेंस करते हैं बॉडी में. एंड ऑल्सो वी कैन सी इट व्हेन द lips tremble. ठीक है, when the leaves of the tree moves, the clothes hanging on the clothes line sway, और the pages on the पेपर का बॉक्स जो पेज होता है ना वो भी हिलता है, एंड जो कपड़ा सुखाने के लिए देता है ना वो भी हिलता है, बिकॉज ऑफ एयर ब्लो. अब यहाँ पे दो चीज है. इफ एयर ब्लोज वेरी स्लोली, ब्लो मूव वेरी स्लोली, इसको बोलते हैं ब्रीज. देखो, इट ब्लोज जेंटली as a breeze. जब एयर, when air blows gently, तो धीरे धीरे, it is called breeze. BREEZ. और when air blows heavily, it called wind. ओके, याद रखना. स्लोली होगा तो बोले ब्रीज, अगर बोलते विंड. यू मस्ट हैव प्लेड विथ फिरकी. कैसे होते फिरकी, दिखाऊंगा नेक्स्ट पेज में. पेपर पिन व्हील में many times let's make firki by performing activity. Let's go to the next page. This science is very much interesting if you have enthusiasm to learn it, to experience it, to utilize it, to gain some knowledge. Okay, we are not studying science only for exam point of view, to enhance our knowledge and technical knowledge for future. This is firki. ये प्लेन पेपर में ऐसे काटो, चारों कोनों में हाफ हाफ करके, फिर इसको एक को फोल्ड करो, एक को छोड़ के, फिर जॉइन कर लो, बीच में कुछ लगा दो, तो ये हो जाएगा फिरकी. ठीक है. इन द विंड मिल, इन द सी एरिया, always there is a wind blow, so air blow is there in the sea area. So always if you put like this windmill, it will move automatically. So by using this, the fit motor in the back side, so it is used for different purposes. So क्या क्या काम पे लगता है windmill, ये क्वेश्चन आ सकता है. यूज ऑफ windmill, ठीक है, यूज ऑफ windmill यहाँ पे दिया है. देखो, the working of windmill is similar to that of firki. Wind rotates the wings of a windmill. Windmills can be used to run a flour mills to pull up water from a well or to generate electricity in India. ठीक है, ये बहुत important है. There are many windmill farms also. A windmill farms is an area that has a large number of windmills which use the energy of the wind to generate electricity. ठीक है, ये घूमता है तो पीछे में लगा रहता है डायनामो. ठीक है, तो इससे चार्ज होते वो घूमते रहते और करंट
प्रोड्यूस होता है, wind mills, जो ऊन से चलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मुपंडाल विंड फार्म, एक विंड फार्म का नाम है, इट इज इन तमिलनाडु। जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान एंड Brahmanbel wind farm in Maharashtra are some of the leading windmill features farms in our country। ठीक है, ये नाम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ we learn about water। water is also a source of nature। we have water is also we get from the nature, so source of water is a nature। we have learned that air is very important for us। water too is essential and precious for us। how do we feel when you cannot get water to drink, especially when you're thirsty? water is also important। देखो वाटर किस किस काम पे आता है, वाटर बहुत काम पे आता है। we for survival of living being, okay, we have learned about living beings in the previous chapter, plant and animals। so all plant and animals require water। the watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden, ठीक है ना, ये यूज होता है, ठीक है। तो वाटरिंग कर रहा है इसको, ठीक है। तो वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और किसके लिए चाहिए वाटर, वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, वाटर चाहिए बाथिंग के लिए, वाटर चाहिए प्लांटिंग के लिए, ठीक है, वाटर चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए। इन ईच केस वी नीड वाटर, ठीक है ना। वी नीड वाटर फॉर मेनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूज ऑफ वाटर। सो यू डोंट मिस दिस। क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन, क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट डाउन, जस्ट अ मिनट, देखो क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो आंसर में क्या होगा, आंसर में होगा आपका कि जस्ट मिनट, just a minute, see, the water is being used in cooking, drinking and bathing, cooking, washing and cleaning, ठीक है। it is used for many industrial purpose, यहाँ से लिखा, ठीक है। where do you get water from sources of water, it is in the earth surface। sources of water क्या है, sources of water ये हो गया अर्थ सरफेस, ठीक है। देखो 2/3 ऑफ वाटर, 2/3 ऑफ वाटर वी गेट इन द अर्थ सरफेस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द ओशन, सी, ठीक है। इन द सी वी गेट सैलाइन वाटर, इसमें सॉल्ट रहता है। द सैलाइन वाटर इज नॉट फिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज। बोलेगा व्हिच टाइप ऑफ वाटर
which types of water is not suitable for ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। ये होगा सेलाइन वाटर, ठीक है, जिसमें सॉल्ट रहता है। आंसर होगा सेलाइन वाटर, ठीक है। ये तुम लिख सकते हो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सो यू नीड टू प्रोसेस इट, है ना। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड फ्रेश वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट, ठीक है। फ्रेश वाटर रहता है कहाँ पे? आइस शीट, रिवर्स, लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन द आइस शीट, ठीक है। तो बहुत सारा पे हमने नोट करने के लिए बोला आपको, आप नोट करो पेंसिल से इन योर बुक, ठीक है। एंड लेट अस मूव फर्दर विद दिस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो let us move to the next. Now जो फ्रेश वाटर इन द स्नो में मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर डिफिकल्ट टू एक्सेस, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन द पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। सही बात है, पॉन्ड्स में, तालाब में कहाँ फ्रेश वाटर मिलता है? गंदा वाटर मिलता है ना। वाटर इज ए प्रीशियस, दैट इज व्हाई। अच्छा, नाउ यू कम here is a question. So the answer is ready with me. You see, they have given some activities, column on the activity hand washing. How is water wasted? Suggest ways to reduce the wastage of water. हैंड वॉशिंग में कैसे वाटर वेस्ट होता है? हम हाथ धोते रहते हैं, पानी गिरते रहते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स कैसे होता है? वॉशिंग यूटेंसिल में, टेकिंग शावर में, कुकिंग में, गार्डनिंग में, ब्रशिंग टीथ में। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, देखो, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। बीइंग काइट्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, ये रहा, ये पे देखो एक्टिविटी, हाउ इज वाटर वेस्टेड, है ना, कॉलम 2। जब आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो washing your hands or face with the water running uses about 4 liters of water which causes wastage of water. हम वाटर को टैप चला के करते हैं। हम इसको कर सकते हैं कि एक ग्लास में और मग में पानी लेके फिर हम वॉश कर सकते हैं। टर्निंग द वाटर ऑफ saves 3 liters using only 1 liter each time you wash your, ठीक है, saves water. Washing clothes are bleached, dyed with hard chemicals in water makes the leftover chemical filled with causes the water wastage. Clothes are bleached, dyed and hard chemicals in water makes, ठीक है। क्लॉथ्स में, वॉशिंग क्लॉथ्स में क्या होता है? हाउ वाटर इज वेस्टेड। क्लॉथ्स में तो बहुत सारा केमिकल्स होता है ना, जब वॉश करते हैं तब ये प्रॉब्लम होता है। Skipping the extra use and re-raise the towel can reduce the wastage of water. समझ गया? Washing utensils. When washing dishes by hand, the water run while rinsing can cause water wastage. Fill in the sink, मतलब जब हम यूटेंसिल को वॉश करने के बाद इसको थोड़ा पानी यहाँ से हटाते हैं, तब भी वो टैप खुला रहता है, तो वो टैप बंद करना होता है। fill the sink with soap and water and block the faucet. This will reduce water wastage. Taking shower for longer duration can cause water wastage. Taking shower for a limited time period reduce the water, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, again come to the point. What conclusion can you draw from the information regarding the table? देखो, for example, turning off taps when not in use and fixing water leakage, recycling water and water harvesting also help
सेविंग वाटर, ठीक है। हम वाटर कैसे सेव कर सकते हैं? बाई इफ यू यूज वाटर वेरी जूडिशियसली। टैप को बंद कर दो, ठीक है। लीकेज होगा तो लीकेज को बंद कर दो। रिसाइकलिंग करो वाटर को, ठीक है। हार्वेस्टिंग करना है एक जगह पे। जब बारिश होता है ना तब वाटर तो बहुत वेस्ट होता है, वो वाटर को कोई छत पे कोई टैंक में हार्वेस्ट करना होता है, ठीक है। ऐसे आप वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन गो टू द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन इज, सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसमें आपको और देखो, तो ये जो चैप्टर है ना, यह तक आज खत्म करते हैं। So this is the part one video. I'll show you the next video in part two. So now let us stop here. Thank you for being with me all this time. Hope you are enjoying the video. Thank you. Bye bye. I'll meet you in the next video.